ricochet. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. But when you got this whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be. Comes a thing, maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me क्या हाल है जय भाई, कैसे हो? गेम टेक से कम बैक वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है गेम टेक गिगला भाई, कैसे हो? एलसी ब्रो, अरे कैसे हो ब्रो? और बताओ लंबक अरे नॉर भाई कैसे हो? वेलकम टू स्ट्रीम नॉर भाई। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मिनट में चले आ रही है, ओके। तो काफ़ी कम आ रही है, अभी ठीक है या? और नोर भाई बताओ कैसे आप? गुड मॉर्निंग। यस गार्नित, उठ गए आप? बताओ कैसे हो? सो लाइव स्ट्रीम इन 3 मिनट्स। हाँ लो वॉइस, हाँ मतलब थोड़ी ऐसी जगह पे बैठा हूँ, मतलब अपने रूम में नहीं बैठा, तो लो वॉइस ही बेटर। तो यस, तबीयत कैसी? बस छोड़ू, क्या बात करनी है उसकी। मैंने कहा एक स्ट्रीम तो कर लें इसकी। गेम साउंड क्यों नहीं आ रही बाय द वे मेरे को? क्या भाई वो गेम साउंड क्यों नहीं आ रही है? व्हाट द हेल? भाई आप लोगों को आ रही है गेम साउंड? ये क्या हुआ? I got new phone Redmi 10 Prime. 10 Prime. Ooh. This is good bro. Congrats. आवाज को क्या हुआ? नहीं आ रही म्यूजिक, थोड़ा लो म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक बंद ही कर देते हैं। कहाँ है गेम साउंड? लैपटॉप खराब निशानी ना? अब बेचारा इतने दिनों से यूज नहीं हुआ, मैं भी लेने का टाइम आ चुका है। हाँ न्यू लैपटॉप अच्छे कहाँ है भाई? रुको अभी आएगी ना आवाज। आ गई? हेलो भाई, गेंजिन ऐसे करके स्ट्रीम पे आवाज नहीं आ रही, मेरे को आवाज आ रही। वाह सुशी इज लाइव। अरे यश क्या हाल है? वेलकम टू द स्ट्रीम। Victory. And that's why I've never spent a single more on any of my snacks. I've won them all. Where and कान फाड़ेगा क्या भाई? इतने दिन से स्ट्रीम की नहीं तो कुछ पता। कमिंग इन रिसेट नहीं गेम का नहीं था, मेरे सॉफ्टवेयर का था। और बताओ यश भाई आपकी क्या हाल है? आवाज कम आ रहा? हाँ थोड़ा कम ही है।
मैं तो That's उसका right. कर रहा था अपन लेकिन देखना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है क्यों आ गई भाई हाँ नॉर भाई ठीक है नॉर भाई What is it? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Chal. Wolfendom. एक तो C6 पक्का है एक तो C6 वाओ अभी चलो देखते हैं ट्विच पे क्या सीन है ओ भाई मेरा ट्विच दिख जाएगा ऐसे तो एई आगे ना गेम की एक्सप्लिकेशन यस आज ग्रीन विन ये बात से हाँ एप्पल थोड़ा इधर उधर मत कर देना ठीक है सुन रहा हूँ ओके लाइक अब अभी अभी हाँ A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? who is this really इसके Jester, I have completed the task you दो gave तोरे का me. दिखाएंगे इस बारी यार दो From तोरे this का day कुछ आगे forth, दिखाने में मजा आ जाए Balladeer and Kabukimono will cease to exist. अरे पिक्सर भाई Did you really think you would be able to see through my plan? taking the काम पिक्सर भाई Bore. रिडीम की आवाज नहीं है ना भाई छी Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regret! Have fun with this gift! Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. स्कारमुच की स्टोरी है इस बारी मतलब वो दिखाएंगे कैसे चेंज हुआ क्या हुआ है ना कोड आ गया फर्स्ट तो लिख देते हैं डिस्कॉर्ड पे बाद में डालूंगा अभी ऐसी हालत नहीं है कि डाल सकूं मैं अपना एक छोटी सी स्ट्रीम करने छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी फिर भाग जाएगा पिन कर देते हैं फ्रेंड्स इसी में याद से डाल दे हाँ डाल देगा एक तो रियली स्केड में अरे एक तो है ही हरामी भाई 100 फ्री वाले लोग में गेंशिन मार्च में यार मेरा भी बस यही हाल है बस गेमिंग बहुत कम ओ हेलो सुशी भाई अरे स्पार भाई क्या ले वेलकम टू द स्ट्रीम स्पार भाई रिडीम चलेगा नहीं आई थिंक आवाज नहीं है रिडीम की थोड़ी सेटिंग हिल गई मेरे को देखनी पड़ेगी बाद में सेटिंग Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. बिठा दिया I'm your host, Sarah Miller Cruz, My the voice doctor of was it. Lumine in Genshin Impact. And कुछ होगा today doctor की I'm story. joined by Max, the one and only हाँ, सब लोग कर middleman, सकते हैं। voice of the one and सब लोग only कर सकते हैं, Arataki Autumn। Ito. And I'm Redeem Patrick के लिए 100 primo Pedraza, मिलेंगे voice of the Wanderer. But up until मन में now, आ गई आवाज, travelers have only ओहो। known me as मैं करता हूँ Scaramouche, setting and इसकी। everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know.
Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? कुछ share कर रहा है? Okay, so Sure. I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. अब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं Yeah, समझ आ that रहा। trailer had आवाज everything. तेज लग It रही had है everything. इसकी। It had action. It had ज़्यादा कम हो जाएगी drama. इसकी आवाज। It was lighthearted in places, but it Sassy was trailer, dramatic. saucy trailer. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's like backstory. I'm super Backstory excited about it, Scaramouche for real. के, Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. ऐसे इधर ही Yeah, लो। for sure. And there's थोड़ा quite a ये फिर story साइड behind करना that. पड़ेगा, If देखना you're पड़ेगा क्या interested, सीन then है। be sure to play through the Archon Quest Interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks भी it थोड़ा out. maybe Oh, come आ on, man. You जाए। can't just leave everyone hanging like that. How about some और Autumn hints? क्या ले? Come on, please. Seki dot com in the please. chat. All right, Welcome to all the stream. right. How can I say no Autumn. to a cute Chibi-Ito? You can't. Here's a little You preview can. from the quest. ये कौन सी जगह है अभी? We ran into two people at the academia today talking about an essay. सुमेरु टी? Turns out their topic was about the Nah. Tatarasuna incident. From Something what else. they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Invalid code तो नहीं दिखा। Bad. Wait, कुछ why are गलत they वाला talking डाल about दिया होगा, देख Tatarasuna? लो। I guess we'll have to नहीं तो see. रिवाइंड करके देख लेना, It मेरा is कोड सही interesting डाला though है to see मैंने। the Traveler, Nahida, and Invalid तो Scaramouche नहीं all दी together बताएगा। so peacefully like that. एक दोस्त से सुना कि but आर्टिफैक्ट in this डिसेबल कर interlude दिए chapter, स्टोरी लाइन की Nahida वजह will से। task the Traveler and मतलब? Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in मतलब? search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. बाल And I'm सारा कोई liking तगड़ा मारेगा ना, Scaramouche's new किसी ने सोची ना style. होगी। Ooh, dude's looking बावंडर ला देगा, sharp. बावंडर। Yeah, always. No. Right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Wanderer। Okay, so अब इस कारा के I know I'm दिखाएंगे क्या not the पूरा only लाइव one स्ट्रीम? who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a फारूजन lot. बिठा देते Yeah, यार। for sure. ल्यूमीन को क्यों But बिठाया? I'm afraid that's all we can show for now. Travelers फारूजन will have बैठी to होती है, experience ओहो the हो। story for themselves in आवाज game. उसकी I mean, पता it's नहीं better कैसी to है। explore the storyline without too many spoilers. Wanderer right? troops। True, true. Yeah, I guess you're right. COC। Okay, we'll leave the rest ऐसे for ही था ना, travelers to COC में थे discover ना Wanderer themselves. troops। But ना। the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. अच्छा किट Let's have a बताओगे? look at the Wanderer in ल्यूमीनी combat. तुम्हारी पहली कैरेक्टर है, भूलो। ओहो। There's no need to exchange माफी, pleasantries. It's चलो भाई rather गेम पे दिखा pathetic रहे। to force a conversation गुस्से वाला लात just मारेगा to ना, वही occupy दिखाएंगे। silence. The wind rises. ये डेविल में क्राई का एक वो लग रहा कैरेक्टर। Bow your head. Bow your head. ओहो। अब भाई जीव All निकाल के right, गया मेरे को। Patrick, you're up. Help introduce the जीव Wanderer निकाल for के गया us. ऊपर से Sure thing. एक The Wanderer is आवाज a निकाल के catalyst गया। user and has an animo-vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second. सब Windblade? किक का ही Not जल the same as the दिल- Traveler's wind blade, किक though. के ही Okay. दिलवाने So, हैं, as सभी कह रहे everyone step probably on already गया। noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. ये आ गया ना Upon jetpack using his लगा के elemental उड़ने skill, वाला। he will first deal AoE damage before leaping into the air and Jetpack entering है a bro। hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo Fushudan and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal in नॉर्मल their फेस करके AoE हाँ will be मतलब हो increased. जाती है गलती ऐसे। Their damage will be considered Genshin normal वाला and glitch charge हो attack सकता है, damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so यार, awesome. पहले He can fly. पहले तो बोल I know, रहे थे right? कि ये But स्टैमिना he लेगा। can't stay hovering forever. इसकी While अलग hovering, से the stamina Wanderer होगी। constantly consumes नहीं है। Kuguryoku points to maintain अच्छा, his हाँ, hovering है, state, है, which is the blue meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points.
Okay. Oh. So this mechanic works a little differently than our Shogun. typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Shogun ka dhoka. Kuguryoku points Scar mo rather target. than stamina. So, for example, sprinting mid-air will Last 5 consume star additional 27 wish Kuguryoku pehle aaya points to Very accelerate pretty mid-air. 27? And holding the sprint button will cause 5 star ke persistent baad point जितने wish consumption कर दिए to उतनी पिटी maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding Hobby jump क्या will mechanic cause थी? persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing Kuguryoku hovering points. height. Of course, पैसा आता तो मैं running तो out of इतना भी ले points लेता will end ओहो his hovering state. अच्छा yes Oh, okay. So travelers will need to yes. plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that Indian new instance of the mechanic skill will character. receive a हाँ, corresponding buff effect बहुत ज़्यादा mechanic है depending on इसकी which उड़ते हुए पता element नहीं was क्या क्या contacted. करना है So, for example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a Energy, normal attack, or charged crit rate. attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. इतने look, buff look, मिल look, रहे check हैं that इसको out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. ओबे कितने I like complicated हो गए that. It's helpful and still looks really cool. जी अभी Yeah. like मैं तो So, हूँ ही नहीं after है unlocking another talent, कौन सा character आ Gales रहा of Reverie, when the Wanderer is in यही a वाला hovering Wanderer state, वाला काफी if his अच्छा लग रहा है normal मेरे or को charged attack मैंने hits इतना an देखा नहीं enemy, बट इसका there is a गेम प्ले set और chance to gain मैकेनिक अगर another समझ buff आ जाए तो effect, काफी अच्छा लग रहा allowing है him to sprint रेडन तो आ ही mid-air रही है अगर without ये नहीं लेना consuming तो रेडन तो Kuguryoku फॉर श्योर points. लेनी लेनी है Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is I triggered. saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. All right, भाई this डिटेलिंग brings तो us है to the भाई Wanderer's elemental burst. Yay! So, check Elemental this out. burst से सारे Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. वाह I know, and it actually suits his बस तुम्हें character. चल हट Yeah, I can't help but agree. हिंदी में बोल दे Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This Exploration? is an interesting one. The Weapon. Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. ठीक Hey, है now, you can weapon never complain about saving Mora. Am I right? Okay, Huh? that's मोरा true. बता रहा है All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Are you ready? I'm ready. Yay! अरुजन नहीं What did you say? हाँ हाँ I'm अरुजन old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, इसका ट्रेलर आया and I'll see if I can pick that up. ओ भाई Hmm. भाई जाओ वालों के लिए Huh? जाओ वालों के लिए स्पेशली मेड What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? यार हाँ The base layer design of elemental monuments? to the stream Wait, bro did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Wow. मैडम What? मैडम फारूजन There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, know. and smart too. sassy She seems so awesome. swag तो He's है fun. sassy I wonder what her skirt's made I out know, of. her design is so cool and really detailed. I love it. So even though she Badi looks badi look super bane, young, dobar she's bar actually an super- old हाँ, person. Like, चला सकते हैं where's टीम my सेटिंग में key? बढ़िया Well, she's not that old. I Oh, don't know, right. old man. Farazan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that Wanderer I is think here. about it, yokai can also live a really Achha. long time too. ये That's कुछ right. ज़्यादा Yeah, नहीं no. है? And speaking of age, isn't the traveler's age also kind of mysterious? Mm-hmm, that's true. It looks like all of our characters are intriguing. कारमूच अपना But काम it's बढ़ा safe रहा to है say that Faruzan is way older than most people in Tibet. Faruzan
Faruzan works in the नहीं जाता। Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Pain Sumeru otherwise. and solving many puzzles and Oh, mysteries. हाँ, The notes अब she ठीक है। left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she Development. sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to 100 Sumeru. साल की तो है। Can Oh, you bhai. imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Mm-mm. Wait. So that's how she's been a hairbod for नॉर over भाई, a ये century. तो 100 साल की Yeah. निकल गई। And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, Ruins she's में बहुत kind of गलत fallen हुआ behind the मारुति। times now. अच्छा। Oh, hey, I get what you mean. She was once a Bhai, proud such researcher in a niche field that has purely become such. unpopular after 100 years. So, इतना is सच she कैसे? still completely dedicated to her field? Ruins में ही गलत Yep, करवा दिया and 100 she साल often से। tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. ये वही However, पसंद तो नहीं I think जिसमें she'd prefer to ट्रैवलर be फंसा था। complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being क्या trapped in the मालूम? ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I बट know, वो तो right? 100 ईयर से Okay, ज्यादा बोल so रहे थे ना। now that we've covered her backstory, 8 मिनट why की don't we ऐड। take a look at Faruzan's कहाँ? abilities in 8 combat? मिनट Let's की। do it. Fight. भाई इतनी बड़ी ऐड fight. है। कुछ दिखा रहे हैं। 100 years ओह, have मारुति का passed, गेम yet प्ले। there hasn't been any change to those dumb rules at the Academia. अबे म्यूजिक तो चेंज कर देते, सुमेर Dare में to mess म्यूजिक with लगा me? दिया। ये बफ लगा शायद कोई। ये Have fun with ओए, this दिस इज सारा ब्रो। ये तो सारा है। उरे उरे उरे। I भैया, love all the कैसे geometric मार रही है? shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, 100 साल there's तक so गलत much करते थे। geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So Faruzan minute is an की ad animo तो भाई। character, and she wields a bow as बट her पता weapon. नहीं आगे होगी Her मेरी। normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can Yeah, clump yeah. enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. Whoa. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next अरे shot will be विस्तारा भी reduced, ले रखा है and इन्होंने the तो। arrow will reduce the मेरे को एक target वो वाला enemy's कैरेक्टर animo चाहिए, वो resistance. येलन और याई मेरे को In कितना her डैमेज elemental देती है। burst, she याई deploys मेरे को a वो वाली dazzling नहीं है। polyhedron and releases a अच्छे हैं whirlwind ये pulse. मतलब अपने Throughout अपने its रोल्स duration, पे वो the दोनों बहुत dazzling अच्छे हैं। polyhedron will ऑटम continuously move along जो a जो याई triangular मेरे को path. का रोल है, जो येलन Once का it रोल है, reaches दोनों each अच्छे corner हैं। of that triangular path, बुरे नहीं it है, will unleash रिग्रेट नहीं one होता more लेके। whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's मतलब वो तो कम ही यूज होता है। gone for ज़्यादा तो 100 उनका कुछ और ही years. मतलब Bada-boom! बस ही यूज होता है। Even यही मैं Sino's बोलना jokes चाह are रहा funnier था। than that. They यही were pretty ना। funny. Alright. यही में तो Anyway, बेस्ट let's hear डिफेंस what आती है effects एक these वो whirlwind बोस pulses में। have. Sure. मतलब बेस्ट नहीं When the आती। whirlwind pulse एक hits बढ़िया opponents, DPS आती it will है। decrease their animo resistance. याई It में will जैसे ही also नाम है apply उसका an वो animo वाली damage अच्छा। buff effect to all nearby party members when it's ना unleashed. ना फिर यही Travelers should में note that यही the में effective range of this buff is quite large, यही में तो बहुत and it's अच्छी है। not just बट within the ऐसे है कि whirlwind वो pulse itself, so सिंगल there's no टारगेट्स need के to लिए go बहुत अच्छी है। chasing अगर the बहुत सारे polyhedron. एनिमीज आ जाएं उनके लिए After थोड़ा काम unlocking खराब हो her जाता है talent, उसका। Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This effect can only be triggered once बस for a certain duration of time. एनिमो Oh, so it बेनेट seems she'll be the solid support. एनिमो बेनेट Totally!
And as a researcher of mechanics and puzzles, Faruzan has taken it upon herself to explore many ruins, वो भी with her specially designed travels for taking her Zhao all across users. Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure Especially no other for Zhao, mentor in क्योंकि plunging Haravatat का has बहुत ज़्यादा 100 years increase है. of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta Mind say, कितना that's active है pretty मेरा hard और to right? beat. So, पढ़ाई कर the करके big question is, when पढ़ाई can कर करके travelers pro बने हुए expect to get these new characters? Skyward That कहाँ is a है? good Skyward. question. Let's talk about Why? the upcoming event wishes. In the early part of version ये 3.3, नई मौजूद the आया ना Wanderer YouTube and पे? Arataki Ito will be भाई available YouTube via वालों ने their क्या own बना event दिया? wishes. Faruzan will also be YouTube वाले making her पागलों के debut Twitch in these बना दिए event इन्होंने wishes. तो. In the later ये part of क्या version है? 3.3, we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Let's Shogun go. and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tule's Ayato Remembrance, Raiden. will be appearing in a new weapon event wish. New emoji. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers New? should be sure to check out the corresponding domain. Woo! New More artifact. artifacts! All right. I hope ये travelers क्या है? will have fun experimenting and Anemo trying new bonus? combinations with these. Yeah. Okay, we've already talked about a अरे ton of new content, भाई. so why don't we take a quick break with भाई another plunging redemption attack code? 40% बढ़ रहा है Roll out भाई. the जाओ code. आर्टिफैक्ट ही आ जा रे भाई. जाओ आर्टिफैक्ट एक और आ गया मेरे को लग रहा. कोड. रुको कोड लिखता हूँ. यार म्यूजिक अच्छा चला है. दे दो यार म्यूजिक. मैं भी सुन लिया करूँ. छापो पैसा. वीसी जाएंगे मेरे से दूर. मेरे पास नहीं है ये इमोजी. अरे YouTube अपडेट करके देख लो ना. एप्लीकेशन अपडेट करके देख लो, मैं भी आ जाए. अपडेट आया था ये शायद. नॉर भाई बड़ी जगह पैसा लगा रहे हैं. रेडन पे लगाएंगे, आयातो पे लगाएंगे, फारूदन पे लगाएंगे, स्कारा पे लगाएंगे. ओ भाई नॉर भाई. Welcome back to the version 3.3 No, special event आ गया. program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've Game already tech mentioned तुम the क्या Test कर of रहे हो? Courage event, and Raiden. I'm sure plenty of you were Raiden. wondering about that, so let's रेडन start कब there. आएगी? बस रेडन Aha! भी जो बैनर आएगा You उससे must अगले be here to बैनर में. participate in the test of courage. उससे अगले I बैनर can में आएगी. already फेज see a 2. dark aura surrounding the two of you. इन्हें तो If you मगा क्या कुछ? carelessly go running into the event, all it'll take is इन्हें one तो मगा little कुछ. misstep, and the darkness will रेडन पे और swallow वेपन you बैनर up. में. ओहो. क्या नाम है? Some पैट्रिक. strange and unusual things may आंटी occur जी. along the way. If you ever feel you can't ये handle ऐसे it, क्यों बोल रहे you हैं? may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. ऐसे डरा क्यों 3, रहे हैं? 2, Waiting for Ayaka, I want to see to 1. her and Welcome want to her the with- test of Oh, courage. तो Enter सारे at your skip बीच own में. risk. ये भी ठीक है. That अभी आने was वाले हैं. pretty interesting. अभी Wanderer आने वाला है. Wanderer. Yeah, I नया mean, correct. it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary हाँ. stuff going on there. I ain't Wanderer के scared. बाद आएंगे रेडन. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, ये क्या what's है? this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. बनाएंगे haunted We've बना already रहे हैं. got the rules down, so I'll First do a quick animated sword. introduction. क्या Basically, ये sword travelers anime? will have to control a Ah. bouncing bar to bounce a ball and use इन्होंने तो skill वो ball game लगा effects to दी. break as many अबे bricks as Genshin वाले possible. कैसे बना लेते हैं Okay, यार I'm ये liking सब? this one. Seems pretty straightforward. कैसे बनाते During हैं the सब? game, travelers will be able to trigger ये तो elemental reactions to break Mini bricks games more को जोड़ के effectively. करते हैं यार सब कुछ. Nice. It even has elemental reactions. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the Bye. corresponding element will be applied to the bar. By switching किसके लिए characters, you wait can करूं? change the element of the bar. मेरे पे Okay, Diluc all और the pieces Bennett are है. falling in place now. The bar can Oh. infuse a certain element, and the blocks Raiden के also लिए कर have लो. their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed क्या it. mechanics लगाई The है bar इन्होंने? will add the element corresponding to your character. Besides triggering Wow. reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by मजेदार an लग रहा element and it hits the bar, दो it बंदे will खेल सकते also तो और trigger भी a मजेदार. reaction,
causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your objective, collecting balloons. Wow. I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the Rebels and the Hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the Hunter is to capture all the Rebels, while the Rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the Hunter. Okay, that's straightforth enough. So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the Rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match, even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If the beacon successfully traces the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So even after you've been captured, you can be like a little ghost trying to help your teammates by disrupting the hunter. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore.
Exactly. क्या होता But था, what underwater does the जाके छुप जाते hunter थे get लोग। this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The ये तो hunter सारे will now be पुराने able to हैं। use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter ये that a ads, rebel अरे was अरे detected. ads If a beacon is caught in the एक ही आ net, रही होगी, it will be skippable destroyed, होगी यार, and the ऐसा मत hunter करो। will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The ये skill event rebels बहुत अच्छा used था in भाई। previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels चल रही will है। be able to मेरी use stream an पीछे चल रही है? all-new कोई नहीं, concealing वो तो कोई beacon सीन skill. नहीं है। This skill will allow you to deploy a beacon for a set मतलब duration मेरी and remain stream invisible या while you're around that beacon. Genshin की stream All players, मेरे लिए including पीछे your चल rebel रही है। teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention Primo Gems and other rewards? Ah, the good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next मजेदार event event होगा। is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. ये In a scene पहले forbidden अच्छा place था। कोई warded नहीं, by चलने दो dust and थोड़ा पीछे। sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to 10 मिनट stop से your क्या होता है coming. भाई? Weed store. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. ये कौन सा है? Each has a different ley line disorder, मेरे को याद and नहीं आ रहा। travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the मैंने distribution खेला of तो होगा। enemies. There will also be ये trial तो characters सुमेरू for का you to कोई ये select नया from as लग रहा well. है। After entering the अरे domain, जयगौर भाई क्या travelers ले? will need to go and complete बस 3 क्या बताएं challenges to जयगौर भाई? collect ancient runes. बुरे हाल चल After रहे। collecting power from 3 ancient runes, we अभी can भी power गायब up ही the रहेंगे। control array and proceed to the final challenge. अभी Also, भी गायब throughout ही the रहेंगे। trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. जब मेरे को Travelers रहना may नहीं choose to है। interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms और of बताओ rewards, आपकी क्या हाल है travelers भाई? can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. सिक्किम मिला था ना, Ooh, I like मेरे से prizes. नहीं हुआ ये। And last but Shiki. not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving Wow. their resin and earning more चलो Mora and रेजिन experience थोड़ी सी books. सेव कर सकते हैं। Nice, that's awesome. बढ़िया। That'll be great for all the travelers out there still leveling up all एक their new बेकार बात characters. है, आया तो And हरन even if you चाहिए don't था, need those लेकिन ये लन भी resources चाहिए, now, क्या it's करूँ? always good to stock up and have Go more for on hand. character. Am I right? Yeah. मैं तो यही बोलूँगा, go So, for travelers character. looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode Let's called go. Genius Invocation TCG. TCG आ गई। But before we get into that, let's take another quick break ये and तो बहुत enjoy है। a redemption code. हाँ, Yay! Slap that redemption code on the code। screen. redemption code डाल देते हैं गाइस, ले लेना। ची 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 ची। ये लास्ट होगा ना redemption code? परमानेंट इवेंट आई थी, यस। ये काम का नहीं, प्रीमो नहीं देगा। अरे बट खेलने में मजा है ना यार। प्रीमो के लिए खेल रहा हूँ तो अलग बात है। मैंने मैं एनगल्फिंग और हेरन आएगा, वुड से रेडन है तो समन करो। रेडन है शायद गिगला पे। क्या एनिमेशन बनाते हैं? बैकग्राउंड टीसीजी के एनिमेशन बनाए, फिशल निब्बी के दिखाई है बाय द वे। फिशल निब्बी ही क्यों? कोई और खड़े कर लो यार, येलन कर लो, कुछ कर लो। ओहो, arigato पिक्सार भाई। Welcome back, everyone. During our journey into that, we've stumbled across Pixar, why, several thank you. NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Tibet by storm.
In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. NPC. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing. Promotion कर रहे हैं क्या? Yai Publishing. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So, in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like Dukh needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing, so.
प्रियो को पॉइंट्स मिल गए वाह तो अपना मजाक कर ले The new characters look cool. यार इत्तो का And what बीट about बॉक्स तो बनता Scaramouche है एंड में hovering? इत्तो का that's बीट I बॉक्स know, तो that's बनता है awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini चल games. चल I'm इत्तो super excited. चल इत्तो This was so fun. You don't I'm have to really take glad anything, that बस we चुपचाप got to आ do the जाओ special जल्दी program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my third time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes, Doesn't I it feel feel good to honored feel to be here. special? Seriously, I'm Do just you like- feel special? I really इत्तो do. पागल हो Thank बड़ा you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in Please like game. कर देना let's go for Okay, 20 bye. Bye. Okay, bye everybody. Bye, everyone. See you later. यार बीट बॉक्स नहीं करके क्या बहन क्या ऐसे कैसे चलेगा यार बीट बॉक्स नहीं करके यार सीन ऐसा है कि मुझे मेरा अकाउंट चाहिए जिस पे नंबर लॉगिन है तो ब्राउजर पे लॉगिन किया तो ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है मिल जाएगा बट पासवर्ड क्यों आता है यार पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन वही नो तो मिलती है बाद में ब्रावो ओके बाय बाय नॉर बाय एक तो एलन दोनों चाहिए तुमसे वेल की स्पॉन्सर अच्छा इधर भाई खुद के लगे पड़े हैं नहीं दिखाया इन लोगों ने स्नीक पीक हाँ स्टोरी का नहीं दिखाया ज़्यादा है ना स्टोरी का इन्होंने कमीने हैं किसी को आना तो आ जाना कमीशन वमीशन करने अपन स्टार्ट करते थोड़ा सा गेम प्ले भी कर लेते हैं ज़्यादा देर नहीं थोड़ी सी देर ही मैक्स टू मैक्स साथ ही करेंगे नो इनएक्सपेक्ट का स्नीक पीक देते नहीं देते मेरा सिग्नेचर पढ़ लेना ओके बड़े दिन बाद क्या सिग्नेचर है ऐसा Elan fund someone. Wow. Impressive. Impressive. Can't catch me. Why so impressive, bro? ये वैसे इतना टीम क्या कर रही है? Why the team is here? I will take Stay close and you will live. Raidun, A pleasure to be working with you. Benetrene दो काजुआ. Sounds good to me. कोई भले आकर स्पॉन्सर कर दे ओ चलो चलो बड़ी बड़ी होप्स गुड बढ़िया बढ़िया होप्स तो रहनी चाहिए अपन चला 6 का तक ओके बाय बाय One with nature. थैंक यू फॉर जॉइनिंग वेट हेलो 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 आ रही है ना आवाज सही हाँ सही आ रही है गुड देखकर फ्रॉस्ट ने भी चेंज कर दिया सिग्नल फ्रॉस्ट ये भी ठीक है अब नहीं आ रहा वही थैंक यू अरे रुको यार कहाँ जा रहे हो स्ट्रीम पूरी देख के आओ ये भी ठीक है कैसे चल रहे पेपर सेपर मैंने सुना पेपर सेपर चल रहे और ये दिन करना था हाँ आ जाओ किसी को भी आना है देख रहा था गेम लैग हो रही है क्या मैंने उनको बोल दिया बॉय किनका लाल इधर सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मुझे एमएल मिला डिग्री के लिए और मुझे सीएस चाहिए था इधर से कहाँ जाऊँ एआईएमएल ठीक तो है दिक्कत क्या है उसमें एआईएमएल बुरा थोड़ी है भाई There is no escape. वो तो दिक्कत नहीं है My apologies.
चलते पढ़ने बाय 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 टिकला भाई बाय बाय। बस शुरू होने वाला है पेपर शेपर जरूरी है। करो भाई स्टडी वडी में ग्राइंड। हम भी थोड़ा हेल्थ ग्राइंड करेंगे। आज के बाद पता नहीं कब स्ट्रीम कर पाएंगे। गेम डेव में जाना था। गेम डेव तो एआई के थ्रू भी जा सकते हो इफ यू विल ट्राई। सीट 2 ऑलरेडी है। प्रीमोस ही नहीं है नॉर भाई। देखो प्रीमोस बता दो ना कि 27 की पिटी है तो कितने पुल में आएगा 5 स्टार। यार 70 के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। 70 के पहले आ जाए तो तुम्हारा वो है, वो तो लक है ऑटम। 70 के पहले 70 के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। 90 पे तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा पिटी पे 5 स्टार। अमित के भाई वेलकम टू स्ट्रीम। कैसे हो? फारूजान पे पुल करोगे? फारूजान मैं तो ये लैला भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकल रही। कैसे लगा तुझे? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बट ऐसा है कि मैं उस पर प्रीमोस नहीं लगाऊंगा, मैं रेडन पे लगाऊंगा। जरा इंटरवेंट दिखाता हूँ, देख लो भाई। कुछ ना है। आपको शक लग रहा है मेरे पे? मेरे अकाउंट खेलोगे 2-3 बंद हुआ है, लॉगिन नहीं। अरे इस बार भाई मेरी तो खुद तबीयत काफी खराब है। ये तो मैं पता नहीं आज कैसे आ गया। अभी भी बैठने में दिक्कत हो रही है। मैं तो खुद का अकाउंट नहीं खेल पा रहा इतने दिनों से, आज ही खेल रहा हूँ। ये देखो इवेंट सब पड़ा। 2 दिन बचे, इवेंट किया ही नहीं, अनलॉक ही नहीं किया। जाओ से भी स्ट्रांग हो क्या? ये नहीं मालूम भाई, लगता नहीं। ये देखो लेट कर खेलो। लेट कैसे बताएं जॉय भाई, लेट कर फोन भी नहीं चलता। बैठ कर ही कुछ कर सकते। बुरी हालत, और वो समझ नहीं आ रहा कब ठीक होएगी बुरी हालत। ये तो गरीबी है, देख लो बस। यही है नॉयर भाई। अरे मैं बीच में गेम खेली थी जब स्ट्रीम नहीं किया, तो मैंने ले लगा दिए थे। और बता जॉय भाई कैसी चल रही है दिल्ली में स्टडी वडी? दिल्ली में मेरे को लग रहा कि लग गए तुम बूम बूम करने हैं। बूम बूम कर रहे हो ना मेरे के? बताओ मिले मिली है? नहीं मिली भाई। लेला मुझे मिली, पता नहीं क्या करती। शील्डर है लेला शील्डर है। जोंगली जैसी बना दी भाई, जोंगली से थोड़ी सी कम है बट 4 स्टार इतना स्ट्रांग, सही है। कोल्ड हो गया दोबारा? अरे अरे भाई इस चीज से बच के रहो भाई। मैं इसी चीज से फंसा हूँ, इसी चीज से फंसा हूँ मैं। आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी भाई, अगर तुम्हें कोल्ड बार बार हो रहा है या फिर 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, कंसल्ट टू डॉक्टर भाई। मैं देखो ये कौन मार रहा है मेरे को? लेट मत करो बिल्कुल भी। ये देखो वाह, कौन सा डोमेन कुछ है ही नहीं करने को, क्या ही करूँ, कहाँ रे दिन लगाऊं? टेक केयर जॉय भाई। हाँ भाई टेक केयर। डायना से अच्छा है, यस। स्टेमिना कम है उसका, 1 शॉट में 1.5। हाँ मतलब शील्डर है ना, तो शील्ड लगा दी तो क्या ही करना, एचपी। थैंक यू नर भाई। और हर रोज ठीक हो जाता है अगले दिन फिर। भाई जय भाई कर लो, मैं बोल रहा हूँ
कंसल्ट कर लो भाई, ज़्यादा लेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक अकाउंट से डीसी पे, ओह डीसी पे, ओह डीसी ऑन कर रहे, डीसी नया अकाउंट बना के। मेरा यही हुआ भाई, बस लेट हो गए हर चीज़ में। मुझे लेट होना भारी पड़ रहा का, काफ़ी भारी। रुको लेट्स सी किस पे उड़ाएं बुक। कुंच क्रॉप ना, मतलब यार ध्यान नहीं रखो। पिक्सर से एक बात पूछ सकते हो, थंडरिंग पल्स का 90 पे अटैक क्या है? पिक्सर भाई मेंबर वो 2 मंथ्स, ओ 2 मंथ्स, हेलो arigato पिक्सर भाई बताओ थंडरिंग पल्स पे 90 पे अटैक क्या है? बेस अटैक आई थिंक। नशे करके बीमार हो गए, अभी बॉक्सर पहन के बैठे हो भाई, तुम ठंड लगवाओगे खुद को। 674 A blade embraces its duty 7 as a jeweler पारस दत्ते भाई cherishes their gems. ये नाम रखे दत्ते भाई हो स्वार भाई ने। अच्छा रुको, A blade embraces its duty इसका कर रहा as था a मैं काम, jeweler cherishes their gems. ठीक है इसका सब कुछ तो ये डन है। एम्ब्लेम पे लगाएंगे, एम्ब्लेम पे ही लगाते हैं, कुछ ना है भाई एम्ब्लेम के अलावा। आने तो आ जाओ किसी को। मेरा तो 80 है, 80 है। ओह मेरे भाई भी ऐसे ही हो रहा था, फिर उसको करो बैठ के छोटे पढ़ो A रो blade बैठो। is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ओ नॉर भाई ने फिर से फोटो लगा दी उसकी। 608 मेंबरशिप लेने का मन नहीं कर रहा क्योंकि तुझे रेगुलर नहीं है बेकार। हाँ 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 चलेगा 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 नॉर भाई, मैं अभी खुद का नहीं बता सकता, मेरी अभी बॉडी के साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो स्ट्रीम का नहीं बता सकता मैं खुद कि क्या सीन है। जब रेगुलर होंगे तब ठीक है। मैं ले लूंगा। अच्छा नॉर भाई को वो हुआ नहीं। Fireworks are for now, but friends are forever. CD 66 होगा अटैक का आईडी 66 CD 674 तो अपने स्पाइन का भूल गया था। और बैठे छोड़ेगा, हाँ हाँ समझ गया मैं। पहले ठीक हो जाओ फिर लेंगे, हाँ यस यस। चालू किया है लाइफ में, वैसे चालू क्या है लाइफ में चालू, बस भाई बॉडी साथ नहीं दे रही, यही है स्पार भाई, यही बोल सकते हैं बस। यही है भाई। अच्छा शोगन आंटी 66.2 CD देता है लेवल 90। ओ भाई बदल दिया तो शोगन थोड़ी लेके जा। वाह भाई सुप्रीमो, मतलब डेफिनेटली बेस्ट रहेगा फॉर फारजन। अच्छा बेस अटैक के लिए ओके, जल्दी ठीक हो जाओ स्पार बॉय, थैंक यू arigato मोटिवेशन। ये चल क्यों नहीं रहे? मिस स्प्लिटर लगाओ नॉर भाई, क्या मिस स्प्लिटर लगाओ ना, काफी ठंडा नहीं बनोगे ऐसा।
भाई आया का पे कौन सी स्वॉर्ड आ गई है भाई? मैंने बेनी पे मिसप्लेस कर दिया। वाह जॉर्ड तो भाई ये 61 की कौन दे रहा था भाई? अब नॉर भाई का डायलॉग आने वाले हैं। कौन से नॉर भाई का डायलॉग आने वाला है? मेरा नेट गया? जंगलिंग जॉर्ड हमारा नेट गया चल रहा है। नॉर भाई का डायलॉग आने वाला है। वो तो अरे मेरी पिंग इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? स्ट्रीम रुक गिर गया क्या? लेट मी चेक। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. भाई नेट को क्या हुआ भाई? नेट भाई ऐसा काहे दुख दे रहे हो मैं? नेट भाई प्लीज डोंट गिव मी पेन। गलती से आ गया जाता वापिस। वाह भैया वाह भैया बफर हो रही है स्ट्रीमर कुछ नहीं बता। अरे माफ करता। वर्जन 2.0 में बहुत बग गए। उसकी रेटिंग बड़ी ज़्यादा गिरी हुई है। मैं देख रहा था, मैंने सोचा डाउनलोड करता हूँ, फिर मैंने देखा मैं औकात में नहीं हूँ, मेरे लैपटॉप की स्पेस ही नहीं थी। मैंने कम से कम 3 गेम उड़ा दी तो भी वर्जन डाउनलोड नहीं कर पाया भाई। औकात दिखा दी मेरी वर्जन ने। हाँ। हाँ। लोगों को अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा क्यों नहीं लगा बाय द वे? ठीक तो है, अगर मांग रहे काफी लोग तो पुराना वर्जन चल नहीं रहा क्या? उसके सर्वर डेड हो गए होंगे पक्का मेरे हिसाब से, तो उसके सर्वर चिंदे हो गए होंगे। अबे क्या हो रहा है नेट? दिक्कत हो रही है, नट का ही नहीं चल रहा मेरा ढंग से भाई। तो सही है, हद हो गई। अभी पायरो बुरे हाल। पिक्चर वही आए, फोटो डाल दी इमोजी। एक्सट्रीम वैसे कब प्लान है नॉर भाई? जब मेरे को ठीक लगे। अभी ना कंडीशन ठीक नहीं हो रही, दिक्कत ये चल रही है।
मतलब एंडिंग नहीं दिख रही, मेन ये है। ये तो मैंने घर वालों को ऐसे ही बोल दिया कि करने दो। बीमारी की एंडिंग देख ही नहीं रही, सबसे कुछ ना कुछ बॉडी के साथ पकता ही जा रहा है। मैं तो खुद पक गया हूँ, कम से कम 50 इंजेक्शन लग चुके भाई। पता नहीं बॉडी हील ही नहीं कर रही, जो दिक्कत हुई है। मतलब अगर बॉडी हील करना स्टार्ट कर दे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब खा भी सब कुछ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, डॉक्टर को दिखा के अच्छे से मेडिकेशन। अरे नॉर भाई 12 दिन एडमिट था मैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास 12 दिन। अभी तो स्ट्रीम व्रीम कुछ नहीं, तभी तो इतने टीके लगे हैं। अभी लग रहा है कि फिर से वो स्टेट आएगी। हाँ मतलब मैं बताया भी नहीं ना किसी को, नहीं बता रहा मैं किसी को, मतलब मेन बस क्लोज फ्रेंड्स को ही बताया है। कब से वही ये हो गया यार, मतलब 3 महीने पहले इफेक्ट पता चला था, बट जो बीमारी थी वो साल से बन रही है अंदर। 3 महीने पहले इफेक्ट पता चला, तब से चल ही रहा है कुछ ना कुछ। हुआ क्या है? चेस्ट इन्फेक्शन लगा लो। कोविड का सीन नहीं है, मतलब बोल रहे हैं कि जैसे अपने वो सरिंज वरिंज लगी थी ना कोविड वाली, शायद उनसे स्टार्ट हुआ है। मतलब अब कैसे बताऊं कि एक कोल्ड टाइप है, तो उसके कारण चेस्ट इन्फेक्शन हो गई। अब वो ठीक ही नहीं होने में आ रही। होल सेकंड लेला वही इनकी जैसे। लेला का कॉन्स्टलेशन क्या करता है, कैसा है कॉन्स्टलेशन लेला का? मैं तो खुद सोच रहा हूँ मेरी बॉडी में इतना भी क्या है कि होल हील होने में नहीं आ रहा। अरे क्या इशू, वेलकम टू स्ट्रीम। कैसे हो? मेरी लैला मिल गई क्या? मैं भी एक पुल करके देखूं, किस पे करें? पिटी कितनी है? हाँ पिटी है ही नहीं, ये तो 16 की पिटी है। हाँ देते आए मेरे को पे पुल। लैला दे दे, नहीं दे रहे, नहीं दे। फारुजान नहीं चाहिए इशू भाई तुम्हें? मुझे
मंथ पहले हुआ था, कफ जा ही नहीं रहा था, फिर डॉक्टर चेंज किया, हो गया ठीक। आप भी जाओगे कोई ना भाई यार, अभी क्या ही बताएं, मतलब ठीक है यार, टाइम लगता है बट क्या ही बताऊं। और सारे आ जाएगी, अरे मतलब आ तो जाएगी बट आई नहीं अभी तक। हमने रिडीम नहीं किया, हाँ मैंने कोड से रिडीम किया, भूल ही गया। थैंक यू थैंक यू। ये 12 बजे तक की चलते हैं ना रात को, कर लो यार आप लोग भी, को कहते हैं कोड्स। साइन विजिबल हो रहे नहीं, वही है ना, होल नहीं भर रहा वो वाला। वही तो मैं अपनी बॉडी को गाली देता हूँ कि तभी क्या हो गया, जब तक होल नहीं भरेगा नहीं तो ऑपरेशन का साइन आ जाता है, अगर ज़्यादा टाइम होल नहीं भरा। अब मैं चाहता नहीं उधर तक जाऊं, The world remains constant घर over the वाले जाएं centuries, but ऑपरेशन human तक। life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. कितने, दो थे या तीन? तीन तीन तीन। 75 स्टैंडर्ड बट 75 क्या होल? अरे लंग्स में होल है एक तरह से, जिससे एयर भर रही है अंदर, इन्फेक्शन हो रही है, भरा ही नहीं जा रहा। ये मेडिसिन से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन आता है एंड में। अभी भी 5 लगी हुई है, अभी भी बैठा हूँ तो 5 लगी हुई है थोड़ा, तभी ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा, थोड़ी देर ही बैठूंगा फिर लेटूंगा। मतलब एक खांसी से स्टार्ट हुआ था, जब मेरी खांसी बहुत ज़्यादा थी, उससे साइंस पता चलने स्टार्ट हुए थे कि साइंस हैं कुछ अंदर गलत हो रहा है। नहीं ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है, बट वो बोल रहे थे कि मतलब कभी भी रात को झटका पड़ सकता है बहुत ज़्यादा तगड़ा, तो पहले ही सॉल्व करवा लो, मतलब कि हार्ट अटैक जैसा आ सकता है कुछ भी, वो चल रहा है बस। मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं लगे रहे, नहीं लगवाना कुछ भी, बट Have वो you बोल ever रहे हैं kept कि goldfish as दिक्कत हो pets? जाएगी काफ़ी They're बाद में। very cute. मैं बफर लेता हूँ। प्लीज मोना लेते हैं, बफ करेंगे। डेंजर से बाहर ऑपरेशन। क्या ही बोले, ऐसे कैसे ऑपरेशन। एक ये पाइप डलने में मेरी जान निकल गई थी, पाइप जो डली भाई मैं रोने लग गया था, चिल्लाने लग गया था। ऑपरेशन तो हाँ, नोट जोक। किसी को समझ ही नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। एंटालिया नहीं था क्या, वो क्या होता है मतलब? एनास्टासिया नहीं, इतना नहीं मेरे को लैंग्वेज पता उसका। ओला है कि वेंट मतलब ये कहीं तो ये भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल भी नहीं, क्योंकि
और भी हो सकते हैं होल्ड, Adventure दैट्स time. वाई वो करवाने का फ़ायदा तब है कि कोई भी इन्फेक्शन साफ हो जाए फिर करवाओ। एनेस्थीसिया बोल रहे थे, एनेस्थीसिया भी क्या होता है? ड्रग देते हैं डेंजर ऑपरेशन में, देते हैं पेन फील ना। हाँ मतलब Adventure time. दिया तो था, मतलब वो उससे क्या हुआ कि मतलब अभी किसी यार अब क्या ही बताऊं, अंदर बहुत पेन हुआ एकदम से। वो बाहर नहीं होगा पेन, उससे बाहर बिल्कुल पेन नहीं हुआ उन्होंने जो किया, अंदर एकदम जानलेवा पेन था वो। अरे वो सुन सकता है ना। हाँ अंदर नहीं, अंदर तो भाई Everybody stand back. Shadows of भाई fate. मोना रिचार्ज ही नहीं। मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा बाय द वे? Light it up. Fate is upon you. Teamwork is dreamwork. Destiny. अब हीट तो नहीं गिर गया? फाइट के टाइम में पिंग जा रही है, मतलब बफर कर रही है स्ट्रीम, बफर कर रही है काफी। वैसे ठीक चल रही है हरामी इंटरनेट, क्या दिक्कत हुई है तेरे को? तो बस यही है कि तभी मैं स्ट्रीम करने आ गया कि चिल हो जाता है, नहीं तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था नेगेटिव। घर वालों ने भी हाँ कर दी। मैंने वो स्टार्टेड एक्सचेंज को यूज़ किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अब कैसे बताऊं, ये जो स्टारडस्ट है ना, ये स्टारडस्ट तुम रख लो, इन दोनों के लिए रख लो 75x5, मतलब ये ठीक है, ये 5 मिलते हैं तो 750 स्टारडस्ट रखो और जितना आ रहा है वो यूज़ करते रहो कहीं पे अगर करना है। ऑलरेडी 1 मंथ से ऊपर हो गया ना, फिर देर क्यों कर रहा हूँ? नहीं 1 मंथ नहीं, अभी तो 12 डेज हुए हैं के लिए होता है ना। ओके ओके यस। Shadows of fate. 1 मंथ तो नहीं हुआ। Written in the stars. Please step back. My reckoning. होता है आपके केस में, मतलब पाइप का पेन होता है, वैसे नहीं, मतलब वो तो है थोड़ा, इतना नहीं है, वो बेरेबल है। मैं खुद ही डिमोटिवेट होता रहता हूँ। मेरी पिंगी बात है चल रही भाई, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि कुछ एंडिंग नहीं दिख रही। भाई घर वालों की भी स्ट्रगल देखी है भाई, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी नहीं देखी जाती ऐसे। चेस में होता था, बाद में पता चला कि गैस की वजह से हो रहा। नहीं नहीं, मतलब वो तो छोटी चीज़ें आ गई भाई, वो तो एक गोली लोग एसिडिटी वाली हो जाएगा उससे, तो एसिडिटी टाइप हो जाता। ठीक है अब भाई टाइम ऐसा है तो करना पड़ेगा, Adventure time. लीव दैट। ऐसा की सोचना ठीक हो जा, वही होप सो।
Adventure time! Next on the agenda, for Rex Lapis. Everybody stand back! I come to help. Bishop down! अरे इधर लड़ते हुए ही हो रहा। I'm going in! Let's light it up! क्या है ये? मेरा इंटरनेट जा रहा, गेम का इंटरनेट जा रहा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। Off we go! कुछ दे ही नहीं रहे। अच्छा पिक्चर भाई ऑफलाइन। चलो कोई नहीं, फिर अपन एक ही कंटेंट से वो बाद में यूज कर लेंगे। आप बताओ, आपको कोई आर्टिफैक्ट करना फार्म तो नहीं, तो फिर बंद कर देंगे, रेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर। जरूर रेस्ट करो। हाँ फिर मैं कहता कलेक्ट वलेक्ट भी कर लेते कमीशन, और पिंग भी जा ही रहा है। ये मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ ना, वाईफाई के लोकेशन ऐसी है, दैट इज़ वाई। मिलते हैं फिर। ओके ओके। छू 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 छू। और बताओ आपकी जॉब कैसी चल रही है? छोड़ो वो सब, जॉब कैसी चल रही नौर भाई? कोई गए टूर वूर पे 10-15 दिनों में? वैसे तो टूर वूर जाते रहते हो, तभी पूछ रहा। Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfenham. आज की लाइव स्ट्रीम में वैसे मज़ा आ गया देखकर, काफ़ी दिनों बाद गेम चलाकर। इट वाज फन। कुछ ये क्या है? पता नहीं। छी गेम का इशू है पिंग का तो। यस
blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. मिलते बाद में ओके बाय 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 नोयर बाय थैंक यू फॉर जॉइनिंग AR-59 player AR-59 player with Lisa photo with Thoma and Sarah. This is good. हो गया रेजिन हाँ पिक्सर भाई हो ही गया वो कंडेंस रख देते हैं क्या ही करना वो यूज़ करके उसको रख देते हैं अभी फिर आप भी डेलीज कलेक्ट कर लो हम भी डेलीज कलेक्ट करके देखते हैं क्या करना होमो बस फिशिंग के काम आता है रेस्ट करो ज़्यादा प्रेशर मत देना बुई बुई हाँ जी नॉर्वाय बुई बुई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मोटिवेटिंग मैं भी चल तो फिर यस यस सायु का फोटो इट्स कलेक्ट और विशेष तो भी कर सकते हैं अपन पिंग हुआ था चल रहा है आई डोंट नो क्यों irritating Add astro. Thank you for Add astro. let's go Layla come home Layla please come home not यार मेको दो वीक चाहिए no force chan cease 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 हो गया हमारे साथ चलो फिर हम चलते ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे कब हो पाएगी नेक्स्ट स्ट्रीम बाय बाय मिलते हैं जल्द मिल जाएगी लैला बढ़िया सा गाना लगा देते हैं आप लोगों के लिए मस्त सा गाना देखते हैं कोई छी भाई मेरा YouTube इतना सस क्यों हो गया बाय द वे बाय चलो ये गाना लगा के चलते ठीक है बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे टाटा गाना नहीं चला
Bye 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 bye. Yeah. Bye bye Pixar bro. Bye bye.